Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। Economic Survey 2020-21 projects 11% GDP growth for the next financial year, suggests government consumption-driven growth recovery. Government says country is witnessing a V-shaped recovery showing strength of its economy. And benchmark domestic stocks decline more than 1% amid volatility and negative global cues. आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने अगले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 11% वृद्धि का दिया अनुमान। सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था की विकास दर में सुधार होने का दिया संकेत। सरकार ने कहा कि देश वी शेप सुधार दर्शा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था की मजबूती का पता लगता है और उतार चढ़ाव और नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक 1% से अधिक की गिरावट में रहे। In our top story, Economic Survey 2020-21 has projected GDP growth for the next financial year at 11%. It has suggested that the growth recovery will be driven by government consumption. Economic Survey 2021, tabled by the Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Lok Sabha today, suggested that the net exports and government consumption have cushioned the growth from further plunge. It says that the GDP for the current financial year is estimated to contract by 7.7%. It further says that the nominal GDP for the next fiscal is expected to grow at 15.4%. The Economic Survey gave a detailed analysis of India's V-shaped economic recovery after the shadow effect of the corona pandemic. It says that the mega vaccination drive supports a V-shaped recovery. The survey also highlights that agriculture sector has remained the silver lining in the growth trajectory even during these tough times. It says that the contact-based services, including manufacturing and construction, faced a sharp plunge due to the corona pandemic. The survey calls for more active counter-cyclical fiscal policies, with importance being accorded to fiscal responsibility. It acknowledges that the healthcare sector has taken center stage in the economy. It added that the key role of the government is to actively shape and structure the healthcare market in the country. The survey underscores that the recent softening of the CPI inflation index reflects easing of the supply side constraints in the country. सरकार ने आज कहा कि देश में वी आकार का आर्थिक सुधार हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती और संकट से उबरने की क्षमता का प्रमाण है। विशाल टीकाकरण अभियान, सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत सुधार और उपभोग और निवेश में तेज वृद्धि के बल पर ये आर्थिक सुधार हुआ है। संसद के पटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है और मुद्रास्फीति का संज्ञान लेने वाली नॉमिनल जीडीपी 15.4% दर्ज होने का अनुमान है, जो स्वतंत्रता के बाद का सबसे अधिक स्तर होगा। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रमुख आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यन ने कहा कि बिजली की मांग, माल ढुलाई, ई-वे बिल, जीएसटी संकलन और स्टील की खपत जैसे संकेतों में तेजी लौटने के बल पर ये वी शेप सुधार आया है। श्री सुब्रमण्यन ने कहा कि पूर्णबंदी के बाद जैसे जैसे अर्थव्यवस्था को खोला गया, उसके साथ ही भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक समर्थन के कदम उठाने शुरू कर दिए गए। उन्होंने कहा कि भारत को मूलभूत ढांचे पर केंद्रित वित्तीय नीति की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में धीमी वृद्धि के दौर में सार्वजनिक निवेश के फायदों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख आर्थिक सलाहकार ने कहा कि भारत के सरकारी ऋण की रेटिंग
अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार को नहीं दर्शाती और इस बात के कई संकेत हैं। उन्होंने कहा कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग प्रणाली में संशोधन की जरूरत है। श्री सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत को आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित रखना होगा ताकि गरीबी से लोगों को बाहर निकालने के लिए उन तक समर्थन पहुंचाने वाली नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास अतिरिक्त साधन उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च में हल्की बढ़ोतरी से प्रभाव कहीं अधिक होता है और स्वास्थ्य सेवा पर एक आम परिवार के जेब से होने वाले खर्च में बहुत बड़ी कटौती संभव हो पाएगी। पुनीत, आज जो ये आर्थिक सर्वेक्षण आया है 2020-21 का, उसमें अगर हम देखें तो एक तो उन्होंने जो पूरे ऐसा जो अनयूजुअल हम कहें वर्ष था उसका लेखा जोखा पूरा दिया है कि कैसा उसमें आर्थिक रोड मैप किस तरह से चला, और उन्होंने आने वाले वर्ष के लिए वी शेप रिकवरी का हवाले से कहा है कि 11% जीडीपी ग्रोथ होगी। आप कैसे देखते हैं इस इकोनॉमिक सर्वे को? ये कितना उत्साह जगाने वाला है इकोनॉमी के लिए, पूरे जो कहें कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके लिए? सुनो, देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे ने एक तो फिगर्स जो दी हैं, एक बहुत अच्छा आंकलन है पूरी अर्थव्यवस्था का कि कैसे ये इस वर्ष की शुरुआत हुई और कैसे चैलेंजेस जो थे वो सामने पूरे देश के रहे, और हम जो अर्थव्यवस्था थी उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया और उस अर्थव्यवस्था में कौन सी पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है, पूरा हमको एक अच्छा लेखा जोखा पूरी अर्थव्यवस्था का मिलता है। इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा बातें हैं जो जिस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यूजुअली हम देखते थे इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट से या पब्लिक एक्सपेंडिचर से वो कॉशन करते थे। जो पुराने अगर इकोनॉमिक सर्वे देखें तो वो ये कहते थे कि भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर मत कीजिए या फिस्कल डेफिसिट को आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को अंडरलाइन किया गया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये जो स्पेशल एक अपॉर्चुनिटी है, एक स्पेशल मौका है, उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा रोल है और गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट या सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की चिंता नहीं करनी चाहिए और जो भी सपोर्ट दे सकते हैं इकोनॉमी को, सरकार को देनी चाहिए। साथ में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने ये कहा कि काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज, इसका मतलब ये है कि जब इकोनॉमी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट जैसे कर रही है या इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है तो उस समय सरकार को टैक्स बेनिफिट देने चाहिए लोगों को और बिजनेसेस को, और ज्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए टैक्सेस को रेज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वरना यूजुअल रिएक्शन ये होता है कि सरकार रेवेन्यूज कम होने पर टैक्स रेट को बढ़ाती है। तो इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि नहीं, आप टैक्स रेट मत बढ़ाइए, आप चाहे फिस्कल डेफिसिट टेम्परेरी है तो उसको आप रहने दीजिए। तो इस तरह के कई अच्छे लॉन्ग टर्म सजेशंस हैं इकोनॉमिक पॉलिसी में। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अगला वर्ष में 15% नॉमिनल ग्रोथ हम जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका सीधा असर टैक्स कलेक्शन के ऊपर होगा और टैक्स कलेक्शन काफी बढ़ेगी नेक्स्ट ईयर। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला समय है उसको उन्होंने अच्छा दर्शाया है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट की जो बजट आने वाला है उसको दे विल टेक दैट इनटू अकाउंट। Puneet, Mr. Subramaniam, the Chief Economic Advisor, spoke about indicators, the power demand, rail freight, e-way bills, GST collection and steel consumption as the reasons why the growth is pegged at 11%, which is 50 basis points below the IMF forecast for the next financial year. But he also spoke about how the sovereign credit rating methodology needs correction. Now, why is that important, especially with the government issuing government securities, GSEC, to raise finance for its expenditure and also meet the Fiscal Responsibility and Budget Management Act? Why is it that he said that the sovereign credit rating methodology needs correction? So he has raised a very important point. In fact, he has said that this is the first time in the history that the fifth largest economy in the world that has the lowest credit rating in the investment grade. I mean, it never happens. I mean, large economies of the world, they get credit rating, and India has a very robust economic history where they have demonstrated that never there has been a default. There has never been any stress on India's external payments. And today, of course, we have a record level of foreign exchange reserves. So clearly, India's credit rating, as assigned by these rating agencies, is absolute. I would call it a joke.
really. But they continue to do it. It is important for us because India does not borrow internationally right now, but Indian companies, they continue to borrow from abroad in the international markets, and those rates continue to be somewhat higher for Indian companies because of the sovereign rating. If this sovereign rating improves, the rates at which Indian companies borrow, those rates will come down. We will get lower interest rates for Indian companies. I think that is why it is very important for Indian businesses and Indian economy. पुनीत, आपको लगता है कि उनका इशारा इस तरफ भी है कि सॉवरेन रेटिंग का जो मेथोडोलॉजी है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान न देकर ग्रोथ पर हमें अभी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको पॉलिसी नीतिगत अगर हमें समर्थन देना है तो हमें पूरी पाई को बढ़ाना होगा। ये कितना उनका इम्पोर्टेंट आपको एक स्टेटमेंट लगती है? कितना आपको लगता है कि उनका जो पूरा अभी ध्यान क्या ग्रोथ पर है रादर देन फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने पर? बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हालांकि ये डिस्कशन बहुत लंबा है, लेकिन जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहां पर इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है कि जो इनइक्वालिटी है वो जो है ग्रोथ को अफेक्ट करती है। उन्होंने कहा कि भारत में ये इनइक्वालिटी नहीं अप्लाई करती। भारत में जो टोटल ग्रोथ है, टोटल जीडीपी है, वो पॉवर्टी को दूर करती है, गरीबी को दूर करती है। उसके लिए पूरे देश की जो टोटल जीडीपी है वो ग्रो करेंगे तो हम पॉवर्टी से बाहर निकल पाएंगे। बाहर के देशों में यदि आप देखें तो वहां पर इनइक्वालिटी की बात करते हैं कि कितने परसेंटेज पॉपुलेशन ज्यादा इनकम कमाती है और वहां पर इनके लिए कारगर है। उन्होंने कहा भारत में इनइक्वालिटी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इंडिया में जीडीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल जीडीपी, और यदि उसको हम ग्रो करें तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक लिबरल व्यू है, एक अच्छा व्यू है जो कि पूरे बिजनेस कम्युनिटी के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सपोर्टिव है। क्योंकि हम जब इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो सोशलिज्म उसके अंदर एक नया एंगल उसमें जुड़ जाता है, ट्विस्ट जुड़ जाता है। तो उन्होंने कहा है कि इसको हम दूर रखें फिलहाल और हम ओवरऑल इनकम जो है देश की उसको ग्रो करें और उसी से हमारी जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो देश की दूर होगी। Puneet, we've seen the expenditure in the previous budget focused on transportation, logistics and storage, which has benefited industry with the freight corridor, western and eastern side, even the southern side, benefit agriculture specifically. And we have seen substantial growth as compared to the previous years. Services has always done well. We have seen the IT sector with their BPO services not being affected by the pandemic, in fact growing as a result of it. But what about manufacturing? What is the focus going to be in terms of expenditure and ensuring that there is a revenue and GST collection from this? So, Arjun, interestingly, government has refocused its entire effort on boosting economy through Atmanirbhar Bharat. So they are saying that whatever ways and means we can use to improve business in India, and improving business in India needs better infrastructure, better regulation, in terms of less regulation, better laws which are pro-business laws. So I think those are legislative changes, but at the same time the infrastructure sector, the roads have to be improved, ports have to be improved, airports have to be improved, the digital infrastructure in the country has to be better. So when all these things happen, then we can really get the manufacturing sector going. And I really appreciate this because earlier, we used to talk about so many other things, but the basic requirements of the economy, this infrastructure which supports businessmen, which supports manufacturing, that was lacking. I think we've seen that infrastructure is now improving gradually, and in the next 4-5 years maybe, Indian manufacturing industry, which needs this entire support, they will benefit, and we already seeing that. In fact, if you look at the entire revival of the economy in the current phase, manufacturing sector has been doing well. So we've seen automobile sector doing very well, metal sector doing better. So all these basic building blocks of the economy, they need support from infrastructure, and they're picking up well now. पुनीत, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको एक कई बार इंडिकेटर भी माना जाता है। इनफैक्ट कहते हैं कि उससे कुछ आपको एक संदेश मिलता है कि बजट जो आने वाला है वो कैसा होगा। मंडे को बजट आने वाला है, आप इससे क्या आप संदेश ले सकते हैं 2-3 की बजट का क्या आकार होगा, स्पेशली ये देखते हुए कि प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि ये जो बजट है वो 4-5 मिनी बजट्स के बाद आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, काफी उम्मीदें हैं आने वाले बजट से। खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि ये
100 वर्षों में सबसे बढ़िया बजट होगा या सबसे महत्वपूर्ण बजट होगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो काफी महत्वपूर्ण पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, एक रोड मैप इकोनॉमी के लिए वो अनाउंस कर सकती है इसके अंदर, जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके लिए रोड मैप अनाउंस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जैसे अभी अर्जुन ने सवाल पूछा था, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं और इस प्रकार के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो अनाउंस कर सकते हैं। खास बात मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हम इसको आज के इकोनॉमिक सर्वे को एक संकेत मान के चलें, तो जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि देखिए आप मैं दोबारा से अंडरलाइन करना चाहूंगा उस बहुत महत्वपूर्ण फ्रेज है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज। बेसिकली आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स को मत बढ़ाइए। यदि आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स के रेट को बढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो नीचे आ जाएगी, उसका रिबाउंड जो है वो नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ा सा लूज पॉलिसी को रखेंगे और कोई नए टैक्सेस इंपोज नहीं करेंगे। एंड आई होप दैट शी अलाउज द इकोनॉमी टू रिकवर on its own pace. Puneet, I have a rebound question on manufacturing. Auto and building and construction are already established. Now it is about capacity and new technologies which can benefit government consumption and consumer spending also. But specifically, what about defense production under the Atmanirbhar program? So defense production, in fact, in any economy, if you look at all the advanced economies, if you look at France, if you look at US, France, China, in defense manufacturing is one of the pillars of manufacturing activity in any country. And India was the largest importer of defense goods in the world. So I think it is important that we give a boost to domestic defense manufacturing industry. And fortunately we have, because we have the light combat aircraft Tejas being manufactured in India now. We have artillery guns being manufactured here. A lot of defense manufacturing is now taking off in India. And then it's an ecosystem. It actually boosts entire manufacturing sector. It gives boost to the metal sector. It gives to the engineering sector. So many industries are dependent on defense manufacturing. You are right, Arjun. I think that is already picking up, but we need to give it a further push. And if it happens, then I think it will benefit the manufacturing sector a lot. The main point I would like to focus here is that manufacturing forms a very small part of our overall GDP, unfortunately. More than 50% is services. Manufacturing is barely 20% of the GDP. We need to bring this 20% manufacturing contribution up to at least 30-35% of the GDP. And that is when jobs in manufacturing will be generated. So I think we need to boost. It's been lagging in terms of growth. So we need to boost manufacturing. Government has of course taken many steps like production linked incentives, etc. But it needs to be taken further. आइए अब चलते हैं शेयर बाजार, जहां पिछले शुक्रवार को हुआ मंदी का दौर आज भी जारी रहा। प्रमुख घरेलू सूचकांक आज 1% से अधिक की गिरावट में रहे। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 46,500 से नीचे और निफ्टी 13,700 से नीचे बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.26% की मंदी से 589 अंक लुढ़ककर 46,286 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.32% के नुकसान से 183 अंक कम होकर 13,635 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था, हालांकि गिरावट सेंसेक्स के मुकाबले कम थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.69% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.25% की गिरावट दर्ज हुई। Benchmark domestic stocks today declined more than 1%. Sensex and Nifty logged losses amid negative global cues. BSE Sensex closed below the 46,500 mark, while the NSE Nifty settled below 13,700 level. Sensex plunged 589 points, or 1.26%, down at 46,286. The NSE Nifty also declined 183 points, 1.32%, to trade at 13,635. The broader market at the BSE also fell but outperformed the Sensex. BSE Mid Cap Index ended 0.69% down and the BSE Small Cap Index slid 0.25%. In the Sensex pack, shares of 4 companies gained while 26 fell. IndusInd Bank was the top gainer as it climbed 5.4%, followed by SBI, which gained 3.9%. ICICI rose 1.7% and HDFC Bank jumped 1.5%. On the other side, Dr. Reddy tumbled 5.7%, while Maruti declined 5%. Bharti Airtel ended 3.1% down, Bajaj Auto fell 3%, and Infosys slipped 2.9%. In sectoral indices,
16 out of the 19 sectors fell. Bank sector stocks gained 0.7%, realty added 0.4%, and consumer durables extended marginal gains of 0.1%. On the other hand, telecom and auto sector stocks plunged 3%, tech declined 2.6%, and IT fell 2.5%. Consumer discretionary goods and services slipped 2.2%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,382 companies appreciated while 1,529 rose. Shares of 154 companies remain unchanged. 165 companies rose to their 52-week high while 36 companies fell to their 52-week low. Puneet, as we spoke in the afternoon as well, in fact, after Money Matters, with half an hour of trade left, the VIX actually went up by 4.32% to 25.34, and the provisional data up till 28th, not today, has shown that the FIIs have not been the net sellers, but they have been buying in the market. They've only been selling recently. It's a DII, the mutual fund portion of DIIs who have been the net sellers in the market for the month of January. And we're seeing FIIs also buying index options to the tune of 28,000 crores. What is this indicating about what the intent is in the market apart from selling right now? Are they seeking to short sell? Will this continue and then short cover later? So Arjun, after the markets, the Sensex hit 50,000 last week, we have seen a very substantial profit booking by foreign investors, the institutional investors. And these are the people who are really running the market higher in the previous many months. Interestingly, I'll tell you, and this is my observation on the market and on a very broad basis, that while the headline indices have been falling very sharply in the last couple of weeks, we have seen the broader markets, the small caps and the mid caps, in fact, they are quite stable. They haven't fallen very sharply. They've declined a little bit, but not as sharply as the large caps. My own sense is that the large institutional players, particularly FIIs, have been very aggressive sellers in the last, I would say, 4-5 days, particularly in the last 4-5 days. Domestic institutions, of course, have been sellers steadily over the past many months. They've been booking profits. So if you really ask me, my own sense is that this is a kind of a profit booking which is happening. Markets do fall very sharply during bull markets. So there is sharp correction. But my sense is that once the budget is over and the uncertainty over budget is over, markets will stabilize in the next couple of weeks, and we will see the markets return to some kind of stability. They may not touch a new high in the current year, but I expect the underlying sentiment to remain positive over the next 1 year. पुनीत, आपने बजट की बात की तो दलाल स्ट्रीट को, शेयर मार्केट्स को, जो शेयर मार्केट में स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बजट से क्या मेन एक्सपेक्टेशंस हैं? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं बजट के जिन पर उनकी नजर होगी और जो सेंसेक्स को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं? सोनू, देखिए, दो प्रकार के फैक्टर्स को मार्केट वॉच करती है. एक तो मैक्रो फैक्टर्स हैं कि सरकार की ब्रॉड पॉलिसीज क्या हैं, जैसे हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, या इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करते हैं. फिर कितना सरकार अलग अलग सेक्टर्स के लिए फंड्स को एलोकेट करती है, क्योंकि जो बजट का एक बेसिक फंक्शन है कि किस इंडस्ट्री को या किस सेक्टर को सरकार कितना एलोकेशन करती है, तो वहां पर ग्रोथ के हम अनुमान लगाते हैं. तो मार्केट एक ये मोटे फैक्टर्स कह सकते हो, आप मैक्रो फैक्टर्स कह सकते हो. माइक्रो लेवल पर गवर्नमेंट बाजार जो देखते हैं वो टैक्सेशन को देखते हैं कि सरकार की टैक्स पॉलिसीज क्या है. क्या वो कंपनीज को या जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स का बर्डन डाल रहे हैं? यदि ऐसा होगा तो एक्सपेंडिचर कम होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करता है वो. तो मैक्रो लेवल पर हम देखते हैं ये पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज. और माइक्रो लेवल पर बाजार को चिंताएं रहती है कि कोई नए टैक्सेस या टैक्स में बढ़ोतरी न हो. और उसके मुझे लगता है कि बाजार को वो थोड़ी चिंता भी है कि कोई नए टैक्सेस सरकार इंपोज ना करे बिकॉज ऑफ रेवेन्यू कंसर्न्स. तो इस वजह से बाजार में थोड़ी करेक्शन हम देखिए. आइए अब रुक करते हैं करेंसी बाजार का. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत होकर 72 रुपए 95 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाले डॉलर सूचकांक में दिन के कारोबार में 0.11% की वृद्धि दर्ज हुई और ये 90.55 पर था. पुनीत, आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे. जहां बाजार में इतनी भारी गिरावट आ रही है, वहीं रुपया मजबूत हो रहा है, ये क्या दर्शा रहा है रुपये के बारे में?
देखिए, रुपए की जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है उसमें तो रुपए को और अप्रिशिएट होना चाहिए, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई है कि रुपए को वो नैरो रेंज में 73, 74, 75 की रेंज में रखना चाहते हैं, क्योंकि फंडामेंटल जो है, हमारे रिजर्व है, जो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो सब बहुत पॉजिटिव, उसका बहुत सपोर्ट है और मुझे नहीं लगता कि रुपए में कोई भी गिरावट आ सकती है। रुपए की मजबूती के काफी कारण है, लेकिन आरबीआई इसको मेंटेन कर रहा है द करंट लेवल राइट नाउ। आइए अब चले अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों की ओर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों, वॉल स्ट्रीट में उतार चढ़ाव और अमेरिका की आर्थिक बढ़ावे की योजना पर चिंताओं के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख था। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 3% लुढ़क गया और जापान का निक्केई सूचकांक 1.9% की भारी गिरावट में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग प्रत्येक 0.9% के नुकसान पर बंद हुए और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.6% की गिरावट में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी गिरावट का रुख था। लंदन का फुटसी 1% के नुकसान में था। जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का कैक 1.2% के नुकसान पर थे। सो आपको लगता है कि ये जो रीजनल एक वीकनेस है वो भी रिस्पॉन्सिबल थी इंडिया में जो गिरावट हुई उसके लिए? बिल्कुल। तो एक आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड ही प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं ये वर्ल्ड वाइड बाइंग कर रहे थे और अब सेलिंग कर रहे हैं, तो वो एक अंडरलाइन प्रेशर वहां से रहा। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी कॉशियस हैं बिकॉज ऑफ बजट एंड अदर ईयर एंड कंसिडरेशंस, तो उन सबका मिला जुला असर था। देखिए, दूसरी बात यह है कि मार्केट्स बहुत ऊंचे स्तर पर थी, वहां प्रॉफिट बुकिंग होना एक नेचुरल सा रिएक्शन था। तो मुझे लगता है ये सब कारण जो है वो मिलजुल करके मार्केट्स पर अभी जो शॉर्ट टर्म प्रेशर है वो बनाए हुए हैं। Let's have a look at the US market now. The three major US stock indices closed with gains yesterday. Indices bounced from sharp losses in the prior session as fears lessened around hedge funds selling long positions to cover shorts. Heavyweights including Microsoft, Amazon and Alphabet were among the biggest boosts to the S&P 500 a day after the three major US stock indices suffered the biggest daily percentage drop in 3 months. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both gained around 1% and the Nasdaq Composite Index added 0.5%. What's the behavior of hedge funds who are participating in the US stock indices right now? And the volatility has gone up. The VIX numbers for the US stock indices have gone up. So in the US, of course, everybody knows that there is a short-term issue about GameStop and AMC Entertainment, where a lot of hedge funds have lost hundreds of millions of dollars in speculation. So that is creating some short-term issue, but I don't think that is going to affect the market in the long term in the US. I think again in the US, these concerns about economy, there was this euphoria about elections in US and the kind of money that was flowing into the markets. I think there's some reality check happening right now, and there's profit booking happening. Again, I expect this to stabilize in the next couple of weeks. After that, market should return to some kind of normalcy. Well, let's have a look at the commodity markets now. Oil prices today dropped as a spread of a new COVID-19 variant and lockdowns raised concerns about the near-term recovery in fuel demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $55.80 per barrel, while WTI crude prices were around $52.40 per barrel. There seems to be negative news regarding future consumption of crude oil because of lockdowns and caused by COVID-19 variants. What is your view in terms of global consumption and specifically our consumption along with the pricing? See, in India, consumption has returned to pre-COVID levels as far as petrol and diesel are concerned. I think the long-term fundamentals indicate that oil prices cannot go on keeping higher because the consumption is going to be muted in future, either because of pandemic or because of replacement by electric vehicles. So my sense is that long-term view on oil remains soft. I think oil prices will remain soft. They will go down. They should go down to about $40 to $45 per barrel. That is what the fundamental support really. और अब चलते हैं सोने की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि के अनुरूप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य आज तेजी में रहा। सोना 555 रुपए की बढ़त से 49,160 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी भी 2,900 रुपए के उछाल से लगभग 70,500 रुपए प्रति किलो के करीब थी। आपसे ये जानना चाहेंगे ब्रीफली 24% बढ़ा है सोने की प्राइस 2020 में। आपको लगता है कि 2021 में भी यही ट्रेंड रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता सोनू ऐसा कि अब ये गोल्ड जो है वो ट्रेडिंग रेंज में है, तो वो बहुत नैरो रेंज में शायद है उसके पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद सोनू।
And before we close, a reminder of the headlines. Economic Survey 2020-21 projects 11% GDP growth for the next financial year, suggests government consumption-driven growth recovery. Government says country is witnessing a V-shaped recovery, showing strength of its economy. And benchmark domestic stocks declined more than 1% amid volatility and negative global cues. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.